हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 11 एंड द चैप्टर नेम इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो इस चैप्टर में हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एज यू कैन सी, स्टार्टर पॉइंट, स्टार्टर एक्टिविटी इज गिवन टू यू. See the picture and write one more sentence for each. In first sentence, the subject and object are clear, and in second sentence, the object has become the subject and the subject has become the object. So student, आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपको पहले पिक्चर को ध्यान से देखना है और आपको एक और सेंटेंस यहाँ पर क्रिएट करना है, ठीक है, जो कि फॉर ईच इन फर्स्ट सेंटेंस, मतलब कि फर्स्ट सेंटेंस को ध्यान से देखते हुए आप देख सकते हो कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे कि द बॉय इज ईटिंग अ मैंगो। जैसे कि स्टूडेंट आप फर्स्ट फिगर में देख सकते हो, जो लड़का है वो क्या कर रहा है, वो मैंगो खा रहा है। द सेंटेंस इज द बॉय इज ईटिंग अ मैंगो। तो यहाँ पर जो मैंगो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब मैंगो पैसिव फॉर्म में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाय द बॉय। ठीक है, बॉय यहाँ पर जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया। ऐसे ही दूसरे वाले फिगर में भी आप देख सकते हो, द गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पर अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय द गर्ल। ओके, let's start the chapter. So here you can see the first topic is active and passive voice. A transitive verb has two voices. एक transitive verb में दो voices होती है. First one is active voice and the next one is passive voice. Now read the following sentences. Neha painted the entire house. What is the action performed? यहाँ पर कौन सा action perform किया गया है? That is painting. Next one, what is the subject of the verb painted? Subject क्या है उस verb का? That is the Neha. Next one is who performed the action of painting? किसने perform किया action of painting को? That is Neha only. So in this sentence, the subject of the verb also performs the action mentioned in the verb. तो यानी कि स्टूडेंट इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वर्ब का वो क्या कर रहा है, वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है which is mentioned in the verb. Okay, this sentence therefore is said to be in the active voice. तो इसी वजह से ये जो सेंटेंस है ये कौन से फॉर्म में है, it is in the active voice. Okay, when the subject is the doer of an action, it is said to be in the active voice. मतलब जब सब्जेक्ट जो है वो डूअर होता है एक एक्शन का, तो हम बोलते हैं कि वो कौन सा वॉइस है, दैट इज द एक्टिव वॉइस. ओके, नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. द एंटायर हाउस वाज पेंटेड बाय नेहा. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द एक्शन परफॉर्म. तो यहाँ पर कौन सा एक्शन परफॉर्म किया गया है, दैट इज पेंटिंग. व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब पेंटेड. सब्जेक्ट क्या है इस वर्ब का, दैट इज द एंटायर हाउस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन ऑफ पेंटिंग. क्या यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसने परफॉर्म किया है एक्शन ऑफ पेंटिंग को? नो, इंस्टीड द सब्जेक्ट द एंटायर हाउस रिसीव्स द एक्शन ऑफ पेंटिंग. यहाँ पर इसने जो एंटायर हाउस है उसने परफॉर्म नहीं किया है पेंटिंग को, इनफैक्ट वो ही रिसीव कर रहा है. ओके, वी नो डैट इट इज नेहा हु परफॉर्म्स द एक्शन. हमें पता है कि ये कौन है, नेहा है जो एक्शन को परफॉर्म कर रही है. Hence, this sentence is said to be in the passive voice. तो हम बोल सकते हैं कि जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है. ठीक है, when the subject of a verb receives the action, the sentence is said to be in the passive voice. जब सब्जेक्ट जो है वर्ब का वो रिसीव कर रहा है एक्शन को, तो सेंटेंस को हम बोलेंगे कि वो पैसिव वॉइस में है. Now here you can see rules to change sentences from active to passive. यहाँ पर स्टूडेंट आपको रूल्स दिए गए हैं कि कैसे आप सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हो एक्टिव से पैसिव के फॉर्म में. फर्स्ट रूल, द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द पैसिव वॉइस. जो ऑब्जेक्ट है ऑफ द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस वो सब्जेक्ट बन जाता है इन द पैसिव वॉइस. ओके, नेक्स्ट थिंग इज the subject of the verb in the active voice becomes a proportional phrase in the passive voice by plus the active subject. अब जो सब्जेक्ट है वर्ब का इन द एक्टिव वॉइस वो बन जाता है
will becomes a proportional phrase. वो proportional phrase बन जाता है passive voice में, यानी कि by plus the active subject. Okay. Next thing, the verb in the active voice changes into a suitable auxiliary plus past participle form. जो verb है active voice में वो change हो रहा है एक suitable auxiliary form में with the past participle form. ठीक है. Now here you can see, since the object of the verb in the active voice becomes the subject of the passive voice, it follows that only transitive verbs can be used in the passive voice because an intransitive verb has no object. अब यहाँ पर बोला है कि क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वर्ब का एक्टिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में, तो इसका मतलब यहाँ पर हम सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब ही यूज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में, इंट्रांजिटिव हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है. ओके. Now the next thing is change of pronouns. Pronouns are changed in the following manner in the passive voice. Passive voice में pronoun इस तरीके से change होते हैं. Okay. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, subject in the active voice and object in the passive voice, that is by, agent, phrase. Okay. तो आप देख सकते हो I, we, you, he, she, it, they, ये सभी subject है active voice में, और me, us, you, him, her, it, them, ये सभी object है passive voice में. Okay. Now the next topic is ditransitive verbs. When the verb in the active voice is ditransitive, there are two forms in the passive voice. जब verb जो है active voice में वो ditransitive form में है, तो इसका मतलब यहाँ पर दो forms है passive voice में. Okay? For example, she gave me a pen. तो ये क्या है? Active form है. Okay? अब यहाँ पर आप देख सकते हो me indirect object है, pen जो है वो direct object है. अब आप देख सकते हो I was given a pen by her, ये आपका पैसिव फॉर्म हो गया, या फिर a pen was given to me by her, this is also passive form. Okay. Normally the first form is preferred. ज्यादातर जो है वो फर्स्ट फॉर्म ही प्रेफर किया गया है, यानी कि I was given a pen by her. Okay. Now the next topic is verbs followed by prepositions. Active verbs followed by prepositions retain them when they are converted into passive voice. अब एक्टिव वर्ब्स जो है वो फॉलो करा जा रहा है बाय द प्रीपोजिशन. ठीक है. और वो रिटेन कर रहे हैं अपने आप को व्हेन दे आर कन्वर्टेड, जब वो कन्वर्ट हो गए हैं किसमें, इनटू द पैसिव वॉइस. ओके. जैसे कि फॉर एग्जांपल ही डिड नॉट लुक एट मी, ये आपका एक्टिव हो गया. ओके. आई वाज नॉट लुक्ड एट बाय हिम, दिस इज पैसिव वॉइस. नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. When interrogative sentences are changed into passive voice, they retain their interrogative form. जब interrogative sentences को हम passive voice में change करते हैं तो उनका interrogative form वैसे ही रहता है. For example, do you eat rice, ये active है. Is rice eaten by you? This is the passive one. Okay. Now next thing is simple present. We play football, this is active. Football is played by us, this is passive form. Do we play football? This is active. Is football played by us? This is passive. Who plays football? Active voice. By whom is football played? Passive voice. Or who is football played by? Passive voice. So in simple present tense, active voice का rule है root form of the verb sometimes with S और ES. रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें यूज करते हैं समटाइम्स S के साथ और ES के साथ, जैसे कि ईट, प्ले. नेक्स्ट इज पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस का रूल है इज आर एम प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, और इज एम आर ईटेन, लाइक फॉर एग्जांपल इज एम आर ईटेन और इज एम आर प्लेड. नाउ स्टूडेंट, इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको अपने आप करना है, दैट इज द होमवर्क पार्ट. ओके. Now the next topic is simple past. First one, Ria accepted the invitation. This is active one. The invitation was accepted by Ria. This is passive one. Did she tell a story? Active. Was a story told by her? Passive. Then who answered the questions? Active voice. By whom were the questions answered? Passive. Who were the question answered by? This is also passive voice. Okay. So now here you can see in simple past tense, active voice में आप देख सकते हो past tense form of the verb
यानी कि जो पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो यूज किया गया है, जैसे कि एक्सेप्टेड, टोल्ड. ओके, नेक्स्ट थिंग, पैसिव वॉइस was/were प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. यहाँ पर was और were यूज किया गया है, जैसे कि was accepted, was told, were accepted. ओके, नाउ स्टूडेंट इसी से रिलेटेड आपको कुछ एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको कंप्लीट करना है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपल फ्यूचर टेंस. फर्स्ट आप देख सकते हो, मेघना विल सॉल्व द पजल, दिस इज द एक्टिव वॉइस. द पजल विल बी सॉल्व बाय मेघना, दिस इज द पैसिव वॉइस. नेक्स्ट वन, व्हेन विल ही पे द फी, दिस इज द एक्टिव वॉइस. ओके, इंटरोगेटिव फॉर्म में है. नेक्स्ट इज, इसका पैसिव क्या हो जाएगा, व्हेन विल द फी बी पेड बाय हिम, दिस इज द पैसिव वॉइस. नाउ here you can see in simple future tense, active voice rule is shall/will plus root form of the verb. आपको shall और will यूज करना है और root form of the verb यूज करना है, जैसे कि will solve, will play. ओके, नेक्स्ट वन, passive voice shall be plus will be plus past participle form of the verb. यहाँ पर shall be, will be यूज होगा और past participle form of the verb यूज होगा, जैसे कि will be solved, will be vacated. ओके, नाउ स्टूडेंट इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको कंप्लीट करना है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. माय मदर इज राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय माय मदर. ओके, आर दे डिस्कसिंग द प्रॉब्लम, आर द प्रॉब्लम्स बीइंग डिस्कस्ड बाय देम. नेक्स्ट वन, व्हाई आर यू वॉशिंग द कार, व्हाई इज द कार बीइंग वॉश्ड बाय यू. So here you can see in present continuous tense, active voice rule is/are/am plus ing form of the verb. यानी कि is, are, am के साथ ing form of the verb होगा. ठीक है, जैसे कि is writing, are discussing, is washing. ओके, then is/are/am plus being plus past participle form of the verb. ठीक है, which is with the passive voice. ठीक है, ये किसका रूल है, पैसिव वॉइस का रूल बताया गया आपको. is/are/am plus being plus past participle form of the verb. For example, is being written, are being discussed. Now student, इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको कंप्लीट करना है. Now the next topic is future continuous tense. Verbs in the future continuous tense cannot be expressed in the passive voice. इनको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं पैसिव वॉइस में. Now the next one is present perfect tense. Here you can see the sentence, he has paid the bill, this is the active voice. The bill has been paid by him, this is the passive voice. Next one, who has opened the door, active voice. By whom has the door been opened, passive voice. या फिर who has the door been opened by, this is the passive one. Now here you can see in present perfect tense, active voice rule is has/have plus past participle form of the verb. हैज हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा, जैसे कि हैज पेड, हैज ओपन्ड. नेक्स्ट वन, पैसिव वॉइस हैज बीन प्लस हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे कि हैज बीन पेड, हैज बीन ओपन्ड. नाउ स्टूडेंट इसी से रिलेटेड आपको कुछ एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको कंप्लीट करना है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पास्ट परफेक्ट टेंस. So here you can see, she had bought a car, this is active voice. A car had been bought by her, this is passive. Who had solved the puzzle, active. By whom had the puzzle been solved, passive. Or who had the puzzles been solved by, this is also passive. Okay. In past perfect tense, active voice rule is had plus past participle form of the verb. यानी कि had के साथ आपको past participle form of the verb यानी कि had के साथ आपको past participle form of the verb यूज करना है, जैसे कि had bought, had solved. नेक्स्ट वन, passive voice में had been plus past participle form of the verb, यानी कि had been के साथ आपको past participle form of the verb यूज करना है, जैसे कि had been bought, had been solved. तो स्टूडेंट इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको सॉल्व करना है. Now the next topic is future perfect tense. So here you can see the sentence, she will have eaten her dinner, active voice. Her dinner will have been eaten by her, this is passive voice. Will he have sold the house, active voice. Will the house have been sold by him, this is passive voice.
So here you can see in future perfect tense, active voice rule is will slash shall plus have plus past participle form of the verb, यानी कि will have eaten, will have sold. Okay. Now the next is passive voice. Passive voice rule is will slash shall plus have been plus past participle form of the verb, जैसे कि will have been eaten, will have been sold. Okay. नाउ स्टूडेंट इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको कंप्लीट करना है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. वर्ब्स इन द परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द पैसिव वॉइस. अब जो वर्ब्स है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं किए जाते हैं पैसिव वॉइस में. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मोडाल्स. कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट टू. तो यहाँ पर आपको कुछ मोडाल्स दिए गए हैं. फर्स्ट वन, he can drive a bike, this is active voice. A bike can be driven by him, this is passive. She may eat a mango, active. A mango may be eaten by her, passive. You should buy this watch, active. This watch should be bought by you, passive. You ought to help her, active. She ought to be helped by you, this is passive. Now with modals, active voice rule is modal auxiliary plus root form of use verb. अब यहाँ पर modal auxiliary के साथ root form of use verb आपको लगाना है, जैसे कि can drive, may eat, should buy. Next one, passive voice rule is modal auxiliary plus be plus past participle form of the verb. modal auxiliary के साथ be लगाना है, फिर past participle form of the verb लगाना है, जैसे कि can be driven, may be eaten, should be bought. Okay. नाउ स्टूडेंट इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको कंप्लीट करना है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस. जैसे कि थ्रो द बॉल, दिस इज एक्टिव. लेट द बॉल बी थ्रोन, पैसिव. द बॉल शुड बी थ्रोन, दिस इज ऑल्सो पैसिव. नेक्स्ट वन, ओपन द डोर. नेक्स्ट वन, ओपन द बुक, एक्टिव वॉइस. लेट द बुक बी ओपन, पैसिव वॉइस. और द बुक शुड बी ओपन, पैसिव वॉइस. Now in imperative sentences, active voice rule is the sentence begin with the root form of the verb. अब जो sentence है वो शुरू होता है root form of the verb से, जैसे कि throw, open. Okay. Passive voice, let plus object plus be plus past participle of the word. अब यहाँ पर let के साथ object है, फिर be है, फिर past participle form of the verb है, जैसे कि let the ball be thrown, let the book be opened. Okay. एक और रूल आपको बताया है ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे कि द बॉल शुड बी थ्रोन, द बुक शुड बी ओपन. ओके. नाउ स्टूडेंट इससे रिलेटेड आपको कुछ एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको कंप्लीट करना है. आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, टेक केयर. बाय.